Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 31st of October. Through this video session, I'll be covering the important news and editorial from the Hindu and Indian Express. This session will help all the aspirant who are preparing for civil services examination, any state public service commission examination, and even for any government examination that you'll be appearing for. The entire session is going to be fruitful, especially the aspirant for civil services. You'll be getting some important insights about the given news. So stay tuned till end of this video to get a hand-on experience, and even the questions will be continued with this session. And how we'll be moving in the session: first I will give you the highlights of the news, then we'll proceed further with the detailed analysis. So let's get started with the news highlight for the day. So for today, first we'll be discussing about the COVID-19, whether the COVID-19 vaccine has actually increased the risk of death among the youth, or they have also increased the part of heart attack. We'll see the detail. This is coming from the ICMR study. Second important news talks about the India's pitch for WTO reform. खास करके अगर WTO की जो रिफॉर्म है उसको लेकर के WTO में काफ़ी हद तक बातें कही गई हैं, and India has been pitching for in many important forum as well. The third important news talks about the expansion of the settlement into the flood-prone area. क्या repercussions हो सकते हैं उसके. Second last talks about the researcher that have identified a new mushroom variety in the Western Ghat. And we'll conclude the session with editorial that talks about to clean the air. This is specifically talking about the part of air pollution और उसके क्या क्या repercussions हैं human health पे and even to the environment. We'll see the detail. So let's get started with the complete analysis one by one. And starting this session with the first news of the day, that is ICMR study on the consequences of COVID-19 vaccine. There is a lot of suspicion ongoing that the COVID-19 vaccine, अगर बात करें COVID-19 के वैक्सीन की, उसके बाद Indian youth में specifically when it talks to the part of youth population, heart attack something which is more prominent. This is what was actually part that was discussed. तो sudden death या heart attack क्या COVID-19 के वैक्सीन के बाद चीज़ें बढ़ी हैं, this was long sound, और ICMR ने Indian Council for Medical Research ने एक अपनी फाइंडिंग बताई है, and they have categorically rejected this statement that the death in the adult between 18 to 45, they are specifically highlighted for the age group that is 18 to 45, revealed that the COVID-19 vaccination has not increased the risk of death. That is it. तो ICMR ने straight away इस फाइंडिंग से क्लियर किया है कि इस तरह की जो the part of the information which is surrounding, which is with a malintention and even which is not backed by scientific information, इस तरह की information को खारिज करते हुए ICMR ने categorically कहा है कि COVID-19 के वैक्सीन से ये डेथ नहीं हो रही है. There are lot other reason. COVID-19 वैक्सीन के repercussions की अगर बात करें या साइड इफेक्ट की बात करें, what were the side effect which was actually there? See, COVID-19 के साइड इफेक्ट्स, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में बेसिकली द पार्ट ऑफ नोसिया, वोमिटिंग, और ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे इवन द पार्ट ऑफ द डैमेज टू सम ऑफ द सेल्स वेर रिपोर्टेड, बट एक्चुअली डेथ की अगर बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, ये स्टेट अवे ICMR ने रिजेक्ट किया. Now, what are the finding and observation that was there from the ICMR? Indian Council for Medical Research ने अपने findings में ये बताया कि जो डेथ की बात की गई है फॉर द एज ग्रुप बिटवीन 18 to 45 इज नॉट ट्रू, एंड दे हैव सेड कि इस वजह से सिर्फ यूथ में, आई मीन कंसिडरिंग दिस एज अ यूथ पॉपुलेशन, दैट डेथ इज नॉट रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ दिस. बहुत सारे और लाइफस्टाइल के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसने इस तरह के डेथ के इवेंट्स को बढ़ाया है. In fact, the study find that COVID-19 vaccination has reduced the risk of sudden death among the adult. But in compared to that, जो findings आई है उसमें ये पता चला है कि COVID-19 के वैक्सीनेशन के बाद जो डेथ थी, जो सडन डेथ थी, उसमें गिरावट भी दिखी गई है. The study have noted that there are other factors which is leading to the sudden death. Among them, the first is having a family history of sudden death. ये किसी भी कारण से हो सकती है, whether it's a heart attack, right? हार्ट अटैक के कारण भी हो सकती है ये चीज़ें, और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल बॉडी में, दैट कैन ऑल्सो लीड टू दिस. Being in the hospital for COVID-19 for the past, I mean herd immunity, even if you see the immunity which is actually part,
कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी वो इम्यूनिटी हुई थी। तो इम्यूनिटी अगर किसी की लो है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सर्टेन बिहेवियर दैट इज़ लाइक बिंज ड्रिंकिंग, दिस इज़ व्हाट आई मीन कोल्ड एंड बेवरेजेस, अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें दिस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड। इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ शॉर्टली बिफोर डेथ, बहुत ज़्यादा हाई कार्डियो एक्टिविटीज़ या फिर जिम में भी इस तरह के फाइंडिंग्स मिले हैं कि दैट हैज़ फर्दर लेड टू द ब्लॉकेज, उस वजह से भी कुछ कुछ केसेस में डेथ रिपोर्ट की गई। Now, caution for physical activity. This is what the Minister of Health has actually said. इन्होंने ICMR के findings को they have taken a base and warned that those who have severe COVID-19 in earlier times, I mean COVID-19 के जब infection में अगर किसी को intense COVID-19 हुई थी तो वो physical activity जो खास करके intense physical activity है उसके 1-2 साल के लिए बचे, बिकॉज उसमें हार्ट अटैक के रिस्क हो सकती है, देयर माइट बी, बट आई मीन दिस इज समथिंग विच इज अ पॉसिबिलिटी, बट आईसीएमआर ने कैटेगोरिकली इसे अभी फिलहाल के लिए रिजेक्ट किया। रिसेंटली देयर हैव बीन मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ द हार्ट रिलेटेड डेथ जो कि गुजरात के नवरात्रि फेस्टिवल में रिपोर्ट की गई। Now, just to give you a brief idea how does the mRNA vaccine actually work और किस तरह से ये T cells पे काम करती है, how does the spike protein work. So you can see this is mRNA which is given to an individual via injection, and the vaccine enter the cell and produce the coronavirus spike protein. This is what the spike protein actually look like. और ये T cells के साथ जाके, T cells are the helper cells, basically one which is taking care for the destroying of foreign particles, और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में T cells का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। Now for the AIDS patient जो एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से जो पेशेंट ग्रसित होते हैं उनकी T cells के नंबर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, इस वजह से उनकी इम्यूनिटी लो होती है। Now this cell bind और ये बाद में ये ट्रिगर करते हैं कि अगर कोई फॉरेन मैटर्स आती है तो उनको रिस्पॉन्स करने में। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द mRNA वैक्सीन्स वर्क। Now, moving ahead, India seeks formal talk on the WTO settlement reform. Now, India has been talking a lot about the part of WTO reform. खास करके अगर WTO की dispute settlement body की बात करें, we call it DSB, right? Dispute settlement body. इसमें अभी तक कोई proper resolutions नहीं आई है। एक्चुअली जो इसके फंक्शनिंग है, डीएसपी की जो फंक्शनिंग है, दैट हैज़ बीन पुट इन होल्ड फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड, सिंस 2019, बिकॉज यूएस ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। दे हैव नॉट परमानेंट मेंबर्स, जितने जो एक एक्चुअल काउंसिल की फंक्शनिंग में, जो एपलेट की फंक्शनिंग में जो मेंबर्स चाहिए वो अभी भी स्टिल पूरे नहीं है। नाउ व्हाट इज इंडियाज प्रोएक्टिव एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड? अभी रिसेंट की G20 मीटिंग्स की अगर बात करें, in that meeting also India has affirmed its commitment to WTO reform, and India has been always pitching this, और इस रिफॉर्म के थ्रू प्रोएक्टिव अप्रोच की बात की इंडिया ने। A fully accessible dispute settlement system will help all the member that is targeted by 2024, और इंडिया ने पिच किया है क्लियर डेफिनेशन फॉर द ई कॉमर्स इन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द WTO। WTO की बात करें, दे आर एक्चुअली the organization that defines the rule, trade and order and even important functioning. Now, senior officials ने बताया है that the meeting will be there in WTO in Geneva, and they have asked India for negotiation with more formal setting and commitments to deploy resources and participate in the discussions. Now, functions क्या क्या है WTO की? This is what you need to know. First and important functions of WTO is a resolving the dispute. अगर किसी members countries के बीच में या किसी traders के बीच में conflict होती है, so the dispute resolution is coming from the WTO dispute resolutions body, right? Now there is enforced ruling which is binding on the decision, और इसकी compliances mandatory होती है. Then we have appellate review जो कि provide करती है mechanism for the appeal ensuring fairness and maintaining the stability to ensure coherence predictability in the global trade. If you're writing in mains examination, आपको ये बताना होगा कि जो WTO के dispute settlement system है वो किस तरह से काम करती है. Now you can write all these points. Now moving ahead, dysfunctional dispute settlement system. The dispute settlement system, this is what I'm talking about, dispute settlement system. This is basically with regards to WTO और किस तरह से इसके जो फंक्शनिंग है, डिसफंक्शनिंग वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई। इट हैज़ बिन डिसफंक्शनिंग सिंस 2017, जस्ट टू करेक्ट, इनिशियली आई हैव टोल्ड 2019, बट इट इज़ 2017 फ्रॉम विच इट हैज़ बिन ब्लॉक। और एपलेट बॉडी में जो अपॉइंटमेंट है वो जजेस के अपॉइंटमेंट को रोक दिया है यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और पूरी तरह से ये नॉन फंक्शनल हुई है 2019 में। सो यू कैन टेक दीज 2 पॉइंट इनटू कंसिडरेशन। 2019 में ये फुल्ली नॉन फंक्शनल थी,
और 2017 से ही इसके वोटिंग्स या फिर जो रिटायर्ड जजेस थे उनको अपॉइंट नहीं किया गया। Now 2020 all 7 seats of the appellate has been vacant, जिस वजह से जो resolutions आनी चाहिए dispute resolution system या फिर dispute settlement system WTO की एक apex body है वहाँ से नहीं आ पा रही है। बहुत सारे ऐसे countries को problem हो रही है and India is among the one country which is facing the same problem. Now moving ahead, expansions on the settlement into the flood prone area. किस तरह से flood prone area की expansion से जो लोगों की settlement है उसको problem हुई है and even the livelihood is always and even the part of the people they are living is always disturbed. तो एक study की गई by the World Bank. They have published the report in the Nature and the flood risk in the many cities rising because of the expansion of the floodplain area. The people are exploring the floodplain area for the infrastructure development. Now, क्या finding है study की? This study was actually there in 1985 in human settlement, जहाँ पे flood prone area के बारे में बात की गई थी, and it has been said that it is doubled compared to 1985, right? And the finding has spotlighted the risk of unsustainability and urbanization in India. The study has found that the middle income countries like India have more urban settlement, which is in the flood prone zone, and low and high income countries. Not only India, India is among the one country, उसके साथ साथ जो लो और हाई इनकम कंट्रीज हैं उनमें भी ये डिस्पैरिटी देखी गई है दैट पीपल आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द फ्लड प्रोन जोन. India's urban areas also been flooding with more often than destroying the life and livelihoods. Now, how does India is at risk? ये भी एक रिसर्च की गई है by the Indian Institute of Human Settlement. They have found that India is in top 20 country, but और भी ऐसे countries हैं जो export है hazardous floods के. I mean, if you talk about the floods, most countries are also hazardous to that. और China और US के बाद India is the third country. And even if you see the part of the global settlement जो सबसे ज़्यादा है वो China और Vietnam, India is the countries that have the huge settlement. The risk of the disproportionate higher of the living informal structure has also continued. So India is at the risk, but number 3, we definitely need to take into consideration ताकि जो ऐसे areas हैं जो settlement है which is in the flood prone area should be actually removed. Now, what is the way out? I mean, way out will be the cities that has to expand will go longer and void the expansion for the flood prone area. Market forces के साथ काम करने की जरूरत है where the flood prone area need to be ruled out और किसी भी तरह की जो construction है that to have to be avoided and has to be upstream. Now, we definitely need to differentiate the low income resident and unauthorized structure that is erected for the elite. And every city need to have the scientific mapping of the flood prone area. जो भी फ्लड प्रोन एरिया है उसकी मैपिंग होने की ज़रूरत है. दिस मैपिंग विल हेल्प द सिटीजन. उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी हेल्प करेगी ताकि ये एक्चुअली पॉलिसी बना पाए कि कहाँ किसको रीसेटल करना है. Now moving ahead, new mushroom species in the Western Ghat. Again, something important. This is something, a new species has been found in the campus of Jawaharlal Nehru Tropical Botanical Research Institute at Trivan in Pune. Why I'm making discussion to this news? Because UPSC has already asked questions in the part of mushroom. Mushroom के ऊपर सवाल पूछे गए. Gucci mushroom, right? It's a fungi. It's found in Himalayan and it is cultivated in the Himalayan foothills of northeastern region. I think most of you, those who have appeared and not appeared, आपको इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए और कभी भी इस तरह के न्यू स्पीसीज अगर रिपोर्ट की जाती है तो बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस है कि यूपीएससी उसमें सवाल पूछ सकती है. Now, what is about this species? The name is, the pronunciation is a bit tougher. So it is known as the species is Candolomyces abscomicus, right? So this is what the name of the new species is. The fragile looking is protile honeybee capped और जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल कैंपस में से एक्चुअली फाइंड किया गया तिरुवनंतपुरम. द डिस्कवरी हैज़ बिन गिविंग इम्पेटस विद द पार्ट ऑफ स्टडी एंड फंगल डाइवर्सिटी. तो एक नई वैरायटी और नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की गई है इसके साथ और ये पता चला है कि जो मशरूम की वैरायटी है विच इज़ बहुत सारे ऐसे वैरायटी एक्चुअल में पाए जाते हैं वर्ल्ड में बट इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे सिर्फ 35 वैरायटीज़ जो है ये रिपोर्ट की गई. द न्यू स्पीसीज हैड टर्न स्पॉटलाइट वर्क कहते हैं विद द रिमार्केबल biodiversity which is there in the Western Ghats. So Western Ghats is always rich in the high biodiversity and the discovery of the new species that is Condoleomycetes is giving a new species of 35 species which is there at the worldwide, right? And moving ahead with the editorial for the day, the title of the article is "To Clear the Air." It talks about the air pollution and how the air pollution has given a lot more other problem to the people and even the other
health side effect which is continuing. So what I'm going to discuss with you in this article, first we'll see the AI air list, AQ air list, major pollutant कौन कौन से हैं, source of particulate matter, consequences क्या क्या हैं air pollutions के और the way forward. So just to give you the background, एक recent report published हुई है that is AQAI, Air Quality Life Index, जो कि publish की गई थी by the Michael Carnestone. These things are important for prelims examination, and this was also backed by the Policy Institute of the University of Michigan, and they found that average Indian में 5.3 years के जो लाइफ लॉन्ग है वो रिडक्शंस हुई है. एंड इवन फॉर सम सिटीज लाइक दिल्ली यहाँ पे 11.9 years कम हुए हैं लोगों के because of air pollutions, right? Because of air pollutions, the years are decreasing. And Delhi features the top near the top world most polluted city in the world. Now, IQAR air list की अगर बात करें, Delhi is not alone in the Indian cities. सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम है. दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर इन द रूरल एरियाज. 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो है IQ एयर, जो कि एक स्विस एयर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें 39 जो सिटीज हैं दैट इज फ्रॉम इंडिया. सो दिस इज समथिंग वी डेफिनेटली नीड टू वर्क. एंड रूरल एरिया आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. वहाँ पे भी डस्ट रिपोर्ट किए गए हैं, particulate matter 2.5 रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. एंड दिस इज कमिंग आउट ऑफ द बर्निंग ऑफ द बायोमास और इमिशंस जो कि बहुत सारे इनकोचिंग मॉडर्निटी के प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़े. Now, if you look at the air quality and comparison with the other countries, I mean, if you look at the Asia's level, so worst air conditions है बांग्लादेश में, then Pakistan, India, Mongolia and Afghanistan, और best air quality है Japan, Singapore, Philippines, Taiwan and Hong Kong. Now, कौन कौन से ऐसे मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर. आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स इकट्ठे किए होंगे. बट पॉल्यूटेंट्स आर एयर क्वालिटी, आई मीन स्पेसिफिकली अगर बात करें, जो कि 10 माइक्रोन से कम होती है, 2.5 माइक्रोन होती है. नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लीड. सो दीज आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स. आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Apart from this, benzene, formal part of the benzene and formaldehyde, with a part of wildfire emissions that lead to cancer, और cadmium से air pollutions भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जो कि स्पेशली सिगरेट से आती है. Fine particulate matters or pollutions refer to the pollution which is less than 2.5 micron, and this has been the growing concern, जहाँ पे ultra fine particles जो कि 0.1 micron से भी कम होते हैं, वो भी रिपोर्ट किए गए हैं. लंग्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है. साइड इफेक्ट टू द पार्ट ऑफ लंग्स. Now, source of particulate matter की अगर बात करें, I mean daily life you must be aware कि कैसे ये source आते हैं. First is the part of the vehicle which is there. Then we have plant waste factories, sources like garbage dumps, again sewage treatment plant, forest fire, volcanic eruptions. These are the sources from which this particulate matter, which is PM particle, is released. Now, diesel fuel emissions, road construction, dust, and year on round, this is also igniting and making things more worse. Household pollutions come from the biomass fuel, and open fire cooking from the stoves also lead to the high number of particulate matter in the environment. Now, consequences क्या क्या हैं air pollutions के? These are the part of side effect when it comes to the health side effect. तो पहली ब्लड प्रेशर बढ़ेगी, आपका हाइपरटेंशन इंक्रीज होगी. सेकेंड इज कार्डियोवास्कुलर, सेरिवास्कुलर एंड पेरिफेरल. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो. पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में प्रॉब्लम्स होंगी. कैंसर इज अमंग द वन प्रॉब्लम दैट इज देयर. रिस्क ऑफ डायबिटिक्स, यहाँ पे डायबिटिक्स 1 टाइप 2 दोनों रिपोर्ट किए गए. Dementia and cataract is there. This is specifically with regards to eye. And risk of chronic lung disease and asthma. So lungs problem, the part of lungs damages, heart damages are also reported because of the air pollutions. Now, what is the way out? First and foremost, I think every individual need to take care of this. हमें क्लीन ट्रांसपोर्ट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV are the solution for this. Increased public transport in place with a personal vehicle, rapid transfer to renewable energy sources of fossil fuel, cessations of stubbles, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है. गवर्नमेंट ने स्टबल से भी बायोमास करने की बात की है. गार्बेज बर्निंग नीड टू बी स्टॉप्ड आउट, राइट? वी नीड टू प्रोटेक्ट. गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की जरूरत है. एफिशिएंट डेब्रिज डिस्पोजल बिल की जरूरत है. So if these things are executed to a larger extent, India के mostly cities में pollutions कम report किए जाएंगे. To safeguard this, health,
India must intensify efforts for the ambient air pollutions and strong public policies like strict enforcement of the rules, continuous monitoring, adaptations of the new technology और रिलायबल डेटा के साथ अगर आगे बढ़े तो गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज बना सकती है जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी गवर्नमेंट. दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द वे फॉरवर्ड. Now moving ahead with the answers, कल के जो सवाल है उसके करेक्ट ऑप्शंस और डिस्कशन में आपको बताऊंगा. For first, the correct option is B, that is hypophosphatemia. इसके first statement incorrect है, that is a rare genetic disease with the patients of the bones and teeth, that is demineralizing fragile. और इसके second statement correct है. The third statement which is there is also correct. This is known for cure the disease. Now moving to the second question, both statements are correct. CBI has launched the operation Chakra 2. मैंने आपके साथ Chakra 2 के बारे में पूछा था. And the second statement is also correct, established with the transnational cyber crime in India. Now moving ahead with today's MCQ questions for the day. Make sure you are participating. Write your answers in the comment section down below. The first question is lunar eclipse के बारे में है. It's occur Earth and position exactly between the moon and sun. During the partial eclipse, the moon turns red color. It casts shadow with our sun fall into the Earth's surface. आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है 1 and you have to write the correct option A, B, C or D. You have to write that in the comment section down below. Do participate and bring your strong foundations for the prelims questions. Second question of the day is about the Interconnected Disaster Risk Report 2023. This is the latest report. India is the world's largest user of groundwater, surpassing the combined consumptions of the United States and China. The bulk of Punjab wells are considered as overexploited. Check out for the correct option and write your answer in the comment section down below. This was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, queries about test series, admissions, programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.